Yes, good evening to everybody. All our respected viewers, समस्तंको स्वागत. KCP Competitive English Part 521. Today we are going to learn some different kind of sound, kind of sounds in English. ओडियारे जिमती तमाने साउंड्स गुड़िकर विभिन्न प्रकार साउंड अच्छी महुमाछीर साउंड घड़घड़ी मेघ घड़घड़ी साउंड कुकुर भुकिबा साउंड कौन से गोटे बाण बा फटकार आवाज जोटा सेटा साउंड गोटे गछ पड़िबार साउंड या को विभिन्न प्रकार रे वर्ड्स बा शब्द गुड़िक अछि से शब्द गुड़िक आसंतु आमे जानिबा जदि एग्जामिनेशंस रे पड़े तबे ताको आमे व्यवहार करिबा. यस, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स एटी दिया जाइछि. एटा ऑप्शन बोली आपण भाबि नियंतु सेंटेंस दिया जाइछि माने मीनिंग दिया जाइछि या को तो सेंटेंस कहा जाई पारिबो नै. एटा मीनिंग एई मीनिंग पई को साउंड ता आपणकर प्रयोज्य ताको आपण चिन्हट करिवे चारोटी ऑप्शन भितरु. ओके, क्रॉस, वेल, ब्लेयर, जिंगल, टोन, बैंग, बाज, पैटर. एटा होची साउंड गुडिक. और भी बहुत साउंड अछि. आमे धीरे धीरे आपन को साउंड गुडिक संबंध रे आपन को परिचित करैबो इंग्लिश लैंग्वेज रो. देखंतो ताले नंबर 1 कोन कहउछि लाउड नॉइज मेड बाय ए वायलेंट फॉल और ब्रेकेज. वायलेंट फॉल और ब्रेकेज कोन से जिंस भांगी करी पड़िबा किबा हठात गोटे जिंस भारी जिंस टिके तले पड़ी जिबा जो साउंड हुए से साउंड को कोन कोआ जाए? क्रैश कोआ जाए. इट इज डन फॉर यू. क्रैश. आपण आसंत गोटे सेंटेंस देखिबा. ओके, द ट्री फेल इनटू ए ग्रेट क्रैश. गछ को काटी दिया गला, पड़ी गला, साउंड हैला द ट्री फेल इनटू ए ग्रेट क्रैश. तापरे सेकंड रे अछि क्राई, लाउड, रफ, श्रिल साउंड. देखो तो एटा होची मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग रे अछि क्राई, लाउड, रफ, श्रिल साउंड को कोन कहआ जाय? ताको कहबा हमें कोन वेल कहबा. WAIL वेल. ओके, cry loud, rough, shrill sound. देखो तो गोटे एग्जांपल नेबा. The child burst into loud wails. Question 3. Loud harsh sound like a trumpet. Trumpet आपण जानि छंती गोटे इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. Loud harsh sound like a trumpet. ताको कोन कहआ जाय? सीटा हला ब्लेयर. BLARE ब्लेयर को कहा जाए ए साउंड. सेंटेंस रो गोटे एग्जांपल लियंतु. द ब्लेयर ऑफ पुलिस सायरन shocked us. द ब्लेयर ऑफ पुलिस सायरन shocked us. माने पुलिस सायरन रो शब्द को हमें ब्लेयर ही कहबा. सेंटेंस बा क्वेश्चन नंबर 4. मेटालिक रिंगिंग और क्लिंकिंग साउंड. मेटालिक साउंड, मेटाल मेटाल धातव पदार्थ भितरे बाजिले जो साउंड होए बा क्लिंकिंग साउंड को कोन कहा जाय? ताको कहा जाय जिंगल. जिंगल या को बाछिबे जदि ऑप्शन रे चारोटी साउंड थिबो. चारोटी साउंड भितरो जिंगल को बाछिबे. क्वेश्चन आसीबो एबेला मेटालिक रिंगिंग और क्लिंकिंग साउंड एक्सप्रेस इन वन वर्ड. देख देथिबो वेल, ब्लेयर, बैंग और जिंगल चारोटी ऑप्शन देबो आपण को. ताले जिंगल को आपण सिलेक्ट करिवे. ओके, एग्जांपल लियंतु. आई हियर द जिंगल ऑफ कॉइन्स इन हिज पॉकेट्स. आई हियर द जिंगल ऑफ कॉइन्स इन हिज पॉकेट. पॉकेट भितरे जो कॉइन, मेटालिक कॉइन गुडी को जो बाजे ताको जिंगल कहा जाय से साउंड को. Okay, question 5. Quality or character of sound produced by a musical instrument.
कौन हेबो देखो 5 को पढ़ी नियंतु क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ताकू टोन कहा जाए लिखि दिया जाइछि TONE टोन एग्जांपल लियंतु he is playing violin with an excellent tone he is playing violin in an excellent tone question 6 violent blow sudden loud noise violent blow sudden loud noise को कहा जाए bang लिखि दिया जाय छी एटा को bang बोली करी आपन कहबे BANG bang को सिलेक्ट करिवे ओके let us take an example the firework exploded with a loud bang the firework exploded with a loud bang एटारे bang ही लागिबो ओके जो फायर क्रैकर रो शब्द बा फायरवर्क रो शब्द Question 7. A humming sound like wasps, bee, etc. Humming sound को कौन कहा जाए? Wasps, bee. बिरुडी बा मौमाछी मानकर जो शब्द गुणगुण शब्द ताकू कौन कहा जाए? ताकू कहा जाए buzz. Spelling BUZZ. Okay, buzz कहा जाए. Okay. Let us take an example. The bees are buzzing around a cluster of flowers. The bees are buzzing around a cluster of flowers. Question number 8. Question number 7 हमें कॉल 8 को देखंतु. Sound of rainfall on the roof or ground. एटा अपन जानिथिबे. Rainfall वर्षा पड़िबार शब्द. ताको कौन कहा जाए साउंड ऑफ रेनफॉल ऑन द रूफ और ग्राउंड ताको कहा जाए पेटर ओके PATTER पेटर को आपण सिलेक्ट करिवे चारोटी ऑप्शन भीतर एग्जांपल कोन आई एंजॉय द पेटर ऑफ रेन ऑन द ट्रीज वी एंजॉय द पेटर ऑफ रेन ऑन द ट्रीज ओके देखो तो तापरे क्वेश्चन नंबर 9 सडन लाउड एक्सप्लोसिव साउंड ऑप्शन रे नाही अवश्य कोन लिखिबे ऑप्शन नाही यार हमें देइनो लास्ट सडन लाउड एक्सप्लोसिव साउंड सडन होई जाए ताकू इंग्रजी रे कहा जाए क्लैप CLAP क्लैप लेट अस टेक एन एग्जांपल वी shocked at the clapping of thunder मेघर घड़घड़ी शब्द दैट इज क्लैपिंग ऑफ थंडर यस एही परी शब्द गुडी का विषय रे इंग्लिश लैंग्वेज रो बहुत गुडा वोकैबुलरी पावर जदि आपन को बढ़ाइबार अछि ताले बहुत प्रकार रो शब्द को आपन को जानिबा को पड़िबो अति कम रे 500 and 600 साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज हमें धीरे धीरे आपन को परिचित कराउछो विभिन्न प्रकार साउंड रे अपन साउंड विषय रे यदि आपण लिखि देबे डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स पार्ट नंबर एतिकी यदि आपण सर्च करिवे केसीपी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश रे पाई जिवे एवं आपण ताकू पढ़ी पारिबे जानि पारिबे ओके ताइले देखंतु कीप ऑन वाचिंग आवर चैनल एंड आल्सो द ऑल क्लासेस that is very suitable for your competitive examinations and also improvement of your language skills. Yes, thank you for your watching.